So why we are here today? Because to increase the awareness regarding the blood transfusion, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और where we need to give and how we can make it more safer. So that is the main purpose of today's exercise, along with why we need blood or other component transfusion, why we require red blood, why we require FFP. Predominantly we work on the red blood cells. And what is your thought when you see any child with anemia? So you just transfuse and discharge, or you see more in more detail to prevent the next requirement of the blood. And what is the disadvantage by just transfusing the PRBC? And how judicious we are while indicating blood component therapy. Along with these headings, work need to be do before transfusion and new problem with technology or AI derived complete blood count. Along with blood transfusion queries, how, when, and which blood component is required and which need to be given, and blood transfusion, how children are different than the adults for while transfusing the blood, and how safe to transfuse blood in current era, if any risk exists still or not. Because with technology we have becomes blood transfusion very safe, but still there is a risk or not, we need to aware, and myths and beliefs regarding the transfusion. So blood is the one of the most precious medicine donated by the voluntary donor. Ideally, so it is the most precious donation given by the any human being to save the life of others. So it is very important. So you need to think while indicating the blood product for anyone's. And prescription for any blood component transfusion need to the same level of scrutiny as with any other medicine. You are giving some time iron probe and other heavy antibiotic any medicine, you think this is indicated and why we need to give. So for transfusing blood, we also need to be aware. We need to be more vigilant. We it required or not required, how much and which blood component is required. And especially the high risk or special group in the young infant children, children with cardiac problems, children with acute malnutrition, and pediatric hematology disorder. These children need extra care and precaution while transfusing any blood component. So need to be risk associated blood in these groups. These groups have various inherent susceptibility or risk factors leading to the fluid overload, pulmonary edema, congestive heart failure, and other short and long-term complications like transfusion-related infections. So you need to be aware if we need to give blood or not to give. Hemoglobin main function is oxygen carrying capacity. For once it decrease, it leads to the decrease of oxygen carrying capacity. It may be the children or adult, but once the oxygen carrying capacity of the blood decrease, it leads to the various symptoms like weakness, poor memory, and we recognize and treat. Along with the what is the critical level of hemoglobin body can tolerate? Can you answer? In very good chronic illness are maybe heart problem. So इनमें patient body रह सकता है. Can you answer? अभी देखते हैं yes. So sometimes even 1.9. So it is not in any condition. Acute में आपको general just like हमने देखा कि एक अपने बोल रहे but that is possible. So एक बार WHO यदि hemoglobin 4 तक है बच्चों के लिए और उसके कार्ड और इंफेक्शन बहुत से रिलेटेड काम इसको आपने देखना चाहिए जो है पहली कोर्स तक hemoglobin है जैसे को आप very hard. And यदि ऐसे बच्चे में आप ब्लड देंगे तो इक्विपमेंट का जो इनहेरेंट क्या सर्टिफिकेट होगा तो ब्लड के कॉमन सर्टिफिकेट उसके अलावा क्योंकि आपने ऊपर से ले लिया उसका जो दूसरा सिस्टम है वो वर्क करना कम करेगा
जैसे कोई पेशेंट है, आप बंदा है, तो आप ऐसे कर रहा है, तो सेम बॉडी का ऊपर से ब्लड दे दिया है, तो उसका खुद का सिस्टम काम करना बंद कर देगा और जो इसको स्टिमुलेशन चाहिए वो मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए यदि आप न्यूट्रिशन से उसका पिकअप करा सकते हैं तो वहां पे आपको ब्लड दे देना है। लेकिन लेसन 4 है तो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंड कि आपको यूज करना है, तो दैट इज फॉर न्यूट्रिशनल एनाटॉमी और तो दीज आर जस्ट रफ आइडिया कि लेवल पे क्या सिस्टम आ जाएगा। लेवल में हीमाटोलॉजी या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी आईक्यू 10 से कम हो जाएगी, so there is a high hemoglobin is important. So at 9 to 11 they have minimal symptoms just like little poor memory or forgetfulness, and then like everyone they do. 6 they develop weakness at walking, normal walking, and 3 they dyspnea at rest, and 2 to 2.5 and 4 to heart failure. So there is idea. And the duration of the WHI is usually so that patient from 1.5 to 14 condition. But that patient who is overwhelmed they will progress. So let's say who definitely they need something better. So once you meet the patient with anemia, maybe not a simple thing that anemia का patient आया और there is not a क्योंकि उसका कोई इतना जरूरी है तो उसका एनीमिया के साथ आएगा या उसकी कोई सीरियस कंडीशन आपने आइडेंटिफाई नहीं की तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका बॉटम क्लासिफिकेशन आपके सामने ये हो जाएगा कि यदि एनीमिया मालन्यूट्रिशन के साथ है, विदाउट मालन्यूट्रिशन के साथ बच्चों में बहुत से बच्चे के आगे पे प्रोविजन है तो एनीमिया है, तो इसका मतलब इमीडिएटली कोर्स शुरू हुआ उसमें, इसका मतलब समथिंग सीरियस इलनेस है और उसका रैपिडली डायग्नोसिस जरूरी है, जिसमें एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई अदर मैलिग्नेंसी और वायरल सिंड्रोम हो सकता है, ये वायरल के बाद हो सकता है। लेकिन बच्चे के लिए एंड्रोमेट्रिक मान लें कि उसकी हाइट कम है, इसका मतलब उसको बड़ी बहुत जरूरत है, तो डिटेल इवैल्यूएशन चाहिए। द वर्ड इज रैपिड डायग्नोसिस एंड डिटेल इवैल्यूएशन। तो उसमें फिर आपको न्यूट्रिशन के लिए देखना है बिकॉज़ उसको डाइट एनी माल न्यूट्रिशन सिंड्रोम तो नहीं है, क्रोनिक किडनी मोस्ट और एनी न्यूरोडेफिशिएंसी का और एनी क्रोनिक न्यूरोडेफिशिएंसी और न्यूरोपैथी विल नॉट इंक्रीज। तो जब भी न्यूरो पेशेंट के आपको जो सोचना जरूरी है कि ये इसको डेवलप क्यों हुआ, इतना पेशेंट को सिंपल सा होता है कि क्या बहुत सारे फेरो काम ऐसे उसका बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी कॉमन सबसे कॉमन चाहे जैसे टीबीसी जो एनीमिया इजीली अवेलेबल है आपके टाइम में बिकॉज़ ऑफ ऑटोमेटेड फिल्टर, बट उसका अपने डिसएडवांटेज है। तो उससे हमें क्या सूचना मिलेगी जो आपके पास फिल्टर से सूचना आ रही है, क्योंकि वहां पे ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट नहीं होंगे, मोस्ट वो ऑटोमेटेड सिस्टम से रिपोर्ट आएगी। वहां पे आपको एमसीवी मिलेगा जो आपको जरूर देखना चाहिए, जो मैंने डिस्कस हुआ डॉक्टर अभिषेक सर के साथ आरडी एवरेज कर सकते हैं एंड प्लेट जो हम देखते हैं पर तो जैसे कोई सीसी अगर प्लेटलेट देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं तो थोड़ा को टीएलसी और उसका न्यूट्रोफिल काउंट देखते हैं, इसके आगे हम नहीं देखते हैं क्योंकि उल्टा चलेगा नहीं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारी चीजें। तो जब भी आपके पास सीसी आता है तो उसे एमसीवी कैसा है और एमसीवी या तो अपना मेरे आपको कैलकुलेट करना चाहिए ताकि बहुत सारे पेरेंट है जो ये मैडम के पास आते हैं, उनका ऑलरेडी एक पहली बार हो गया रिलेशन में मेरे आ गया, जबकि एक पहले 2 मिनट तो बताएंगे उनका बच्चा रिलेशन में मेरे आ गया। यदि उनको आपने पहले डायग्नोस कर लिया पीडियाट्रिक एज ग्रुप में तो और फिर जितना भेजे के मुश्किल किसी फैमिली में आप सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जरूर करना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है
खाली हीमोग्लोबिन कम है या अदर कौन है, इसका मतलब है कि यहाँ सोच है वहाँ कितना सीरियस इश्यू हो सकता है। यदि हीमोग्लोबिन के साथ प्लेटलेट भी कम है तो आपको या B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। उसके बाद आते हैं डीएचसी और डीएचसी जरूर देखना चाहिए। डीएचसी जो इन्फेक्शन सबसे कॉमन तो लेकिन डीएचसी 5,000 से 4,000 से नीचे जा रही है, 20,000 से ऊपर, और डीएचसी 50,000 से ऊपर जा रही है तो आपको इन्फेक्शन से आगे बढ़ना ठीक मौसम हो सकता है। ताकि इसका मतलब है आपको और रिमोट रिमोट प्रोवाइड कर सकती है या देख सकते हैं। तो डीएलसी से आपको उसका रिपोर्ट जाता है न्यूट्रॉन भी ज्यादा है। एक साल में छोटे बच्चे में नॉर्मली 30% ज्यादा होता है जो 80% होता है। एक साल के ऊपर किसी बच्चे स्पेशली एक्यूट वायरल इलनेस नहीं है और लिपोसाइट गोइंग बियॉन्ड 70%, 89% तो इसकी वजह से आप देखते हैं और एक्यूट वायरल प्रोग्राम नहीं तो उस ट्रेनिंग से हमें काफी हो सकता है। लेकिन ये और आपने एनीमिया डायग्नोस कर लिया कि मोस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया है या मेरा आदत लेकर तो उसका ठीक है देन कि एनीमिया के कॉजेज के बारे में तो आपको कम से कम पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बीबीएफ हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसमें कभी मिस नहीं करना है। देन एचपीएस इंडिया इतना पुअर नहीं है इसमें कि कुछ टेस्ट नहीं कराने चाहिए। नाउ वी आर इन द अपर नॉट तो नाउ ये फैमिली में एक या दो बच्चा होता है और यदि वो भी कंडीशन मेरे को पता चले तो जब भी एनीमिया का पेशेंट आते हैं कम से कम आप एक बार जरूर पेशेंट बहुत साथ या बहुत जरूर यदि साथ में मान ट्रीटमेंट नहीं किया तो पहले से नहीं करना है। आयरन स्टेट पर मोस्टली करा लेते हैं अलोंग सीरियस ये भी तो जब तक आप बिल्कुल सिंपल सा है क्योंकि दूर के दवाई उन्होंने आईएमएस बहुत सारा है एक बार भेजा था तो उसका टीटी 100 पर है तो 15 साल तक अभिनव ये चल रहा है तो ये वेरी कॉमन करंट है। तो जब भी एनीमिया का पेशेंट आता है तो बिना कम से कम ये 3-4 दिन कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए हमारे लेवल पे कि एचपीएलसी ईटीजी थायराइड रिट्रो एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड एनीमिया हो रहा है तो उसको एनएजी साथ में सेकंड लेवल पे पहले इसको मोस्टली करना यूनिवर्सिटी से बोला गया है पर आज का पेशेंट आपके पास आ गया परसों सिंगल साइड है तो उसको जितना जल्दी बेसिक एक ही ट्रीटमेंट कराना बेटर है। फाइनेंशियल रिलेशन डिपेंड नहीं है तो ये दूसरा है एनीमिया डायग्नोस करके उसका सिम्पटम एनीमिया हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए कि ये सारे साइड इफेक्ट अभी हो रहे हैं। तो एज पर फेब्रुअरी इन्फेक्शन जो सीरियस इन्फेक्शन है one million around infection one in million and retro infection again 1 in 1.5 and fetal hemolysis 1 in 2 million cases में still common होता है और on further still in the area HIV infection happening due to the blood-borne infection. These are data till 259 and latest is by 2018-19 100 patient still diagnosed with HIV due to only transfusion or non-transfusion. So it is transfusion not
this thing. So we need to think twice before prescribing transfusion. That is what. So transfusing blood where required, transfusing blood more than required to only to direct उसके बाद तो सिंगल देन बहुत सारी प्रोटीन आपने देखा होगा डेंगू में ब्लड रेड देनी चाहिए तो डेंगू में कितना है कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि ब्लीड नहीं है और ब्लड दे सकता है तो हम जैसे होती है 90% जब तक मैं एवरी क्लास में चेक करना देखा मेरी एजुकेशन नहीं करता नहीं करता उसका खुला होता नहीं तो ऐसे ही जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे नहीं देना है का मोस्ट बेसिक तो हमें कहीं सोचना चाहिए तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड इट जो आपने देखा है दिस इज द वे उसको लीगल केस हुआ उसमें फाइनल पेमेंट क्या नहीं मिला जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उसको रिक्वायर नहीं था इनिशियल ब्लड के बाद ब्लड टेक्नीशियन के बाद ये वो एक फाइनल पेमेंट प्रेस्क्राइब कोई तो दैट इज ना रिक्वायर्ड आपको वैसे भी ट्रांसफर नहीं करना स्टिल हैपनिंग दैट जो भी ब्लड इसलिए जब भी हम आंसर करते हैं तो ये 10 जरूर आंसर करना चाहिए कि राइट इंडिकेशन है या नहीं हमारे पास राइट ब्लड ग्रुप क्या पेशेंट का राइट वॉल्यूम कितना देना वॉल्यूम पीडियाट्रिक पेशेंट में स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है एंड पेशेंट जो राइट पेशेंट को देना है किसी और को तो नहीं दे रहे एंड राइट ट्रांसफ्यूजन राइट जहां पे गैर ब्लड के इश्यू होगा वो एक इंपॉर्टेंट है राइट डॉक्यूमेंटेशन राइट ब्लड टारगेट है पूरी एसेस करना है एंड राइट प्रॉपर टाइम के साथ तो नॉर्मली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आप जब भी किसी को भी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और ब्लड दैट इज इंपॉर्टेंट कुछ बच्चों में ब्लड देने मां कंट्रोल एनवायरनमेंट देना कार्डियक पेशेंट में दे नीड डायरेटिक अलॉन्ग विद कार्डियोरेस्पिरेटरी मॉर्निंग लेकिन जो क्रॉनिक ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट है उनको मोटिवेशन का रिस्क नहीं होता है राइट दूध मिले वो भी कम हो देन जहाँ जरूरत नहीं है जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के लिए वहां पे ब्लड उतना ही देना कि ऑक्सीजन कैरी में बहुत ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है बीच देखे उनको अपना ब्लीडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना जरूरी है तभी उसका हेमोग्लोबिन ठीक रहेगा एंड स्पेशली इरेडिएटेड ब्लड एटलासिक है सीवियर हमारे इनको आपको इरेडिएटेड ब्लड जरूरी है नहीं तो बीएससी के लिए साबित करना और जैसे क्या तो उनको ना हो मुझे आपको जो ट्रांसलेशन काफी हो जाएगी और टेलीविजन अगर ध्यान को जीतने तो ये जरूरी है these are common target जो जाते हैं जैसे कीमोथेरेपी के पेशेंट में तो उसका हेमोग्लोबिन है ना वो टारगेट करते हैं क्योंकि जब कीमोथेरेपी चल रही है उसका हेमोग्लोबिन ऐसे ही जो मेलिग्नेंसी रीजन का रेडियोथेरेपी का टारगेट है क्रिटिकल इलनेस आईसीयू के पेशेंट है उनका हेमोग्लोबिन पॉजिटिव टारगेट है हाइपरग्लाइसेमिक so these are drug target pediatric patient wants to get वीडियो को 50 से 40 एक करना तो आइडिया उसको अवॉइड करना चाहिए
तो उसके एडवांटेज ये है कि तो आपको ब्लड में तो एक डोनर का ब्लड मिलेगा तो इस हो जाएगी तो ट्रांसप्लांटेशन भी कम आएगी, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत ही अगर आगे मिलेगा और फ्रीडम ठंडा में के पास लेते हैं तो ये भी आपके पास ओपन हो सकता है। देन बच्चे डेफिनेटली पीडियाट्रिक पेशेंट दे आर नॉट, बच्चे जब छोटा बड़ा नहीं कहते दे आर डिफरेंट यूजर एंड मोटी दे हैव more scope to overload, they have different causes of anemia and disease spectrum, तो उसके लिए आपको different approach और diagnosis and treatment plan चाहिए। और तो उसको 50 साल की एज उस कॉम्प्लिकेशन के साथ देखना पड़ेगा, तो इसलिए और तो लाइफ एक्सपेक्टेशन इन जहाँ डिफरेंट और पहले जब से डिफरेंटली ब्लड में अच्छा यार तो ये उसको ब्लड का सपोर्ट चाहिए और कोई एक्टिव है क्रिटिकल इलनेस एरिया जहाँ पे ब्लड और ब्लड रेसिपिएंट यूज करोगे तो यहाँ ब्लड अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज इन पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज करना है, इनको ज्यादा जरूरी है। तो पीडियाट्रिक ब्लड डोनर से मोस्टली जहाँ पॉसिबल करना चाहिए कहीं और बहुत रिमोट एरिया है तो पीडियाट्रिक अवेलेबल है तो आपको पीडियाट्रिक यूज करना है। तो आपको डिलोस डिफाइन करना है तो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन वाले बच्चों में यदि सीवियर एनीमिया के साथ डायबिटीज है आपको 5 ml पर केजी ब्लड ही देना है सोलोली डायबिटीज है कार्डियोवैस्कुलर मॉनिटरिंग के साथ, अदरवाइज वो बच्चे कभी भी जैसे 8 डिग्री में जाके और उनको मैंने खाना और परमानेंट डिमांड डेवलप वगैरह डिफिकल्ट हो तो पहले आपको 5 ml से दे सकते हैं along with diuretic and cardiovascular monitoring। अदर हाई रिस्क ग्रुप में नॉर्मली 10 ml पर केजी देते हैं लाइक आईसीयू और क्रिटिकल एरिया पेशेंट, मतलब उनको कौन डायबिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो यदि फुल वेट ml पे आइसोलेट फुल वेट कर रहा है तो फुल वेट देना चाहिए, अन्य तो ब्लड एंड these are then हो या क्रायो मींस मोस्टली यूजर के साथ लॉन्ग पड़ेगा नहीं, ऐसा नॉर्मली होता ही नहीं है, वो जस्ट ब्लड को ब्लड तो ब्लड सेफ नहीं है तो इट इज गिवन बाय द डोनर एंड मैंने जो आपने तो यहाँ पे उनके रिश्तेदारों को पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑफिसर करें, अब ये नहीं तो यहाँ पे जो आपके रिश्तेदार हैं उनको बोलो कि कोई को डोनेट करो, तो ये बात उनको बोलो कि डोनर से ही आएगा, पैसे से ब्लड निकाला जा सकता है, ठीक है। ये अदर थिंग फैमिली मेंबर से ब्लड कभी नहीं देते हैं, अवॉइड करना ही बेस्ट है। फ्रेश ब्लड इज बेस्ट नो, क्योंकि ब्लड का जो पूरा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जल्दबाजी किया ब्लड को रिपोर्ट देकर दे दिया तो कोई इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, तो मिनिमम जो टाइम चाहिए ब्लड लेके उसको प्रोसीजर करने के लिए और सारे टेस्ट करने के लिए वो मस्ट है, उसको बाईपास करोगे तो साइड इफेक्ट है। और ब्लड अगर मैं कोलेस्ट्रॉल पेशेंट साइंटिफिक प्रिफर नहीं, स्पेशली ऑन द एक्टिव एंड एवरी डोनर और कोई कमजोर मरीज जिसका ब्लड को ब्लड चाहिए उसको प्राइवेट के साथ में यानी सारी चीजें हैं एवरी अटेंड तो वॉलंटरी एक्टिव therefore any blood so saving for need to definitely avoid wastage in blood transfusion, less is more blood transfusion
Avoid waiver can be avoided, motivate for voluntary donation, regular replacement and nutritional care and counseling will save the blood. तो बच्चों में इस तरह की malnutrition या inappropriate diet दो सारे तो काउंसलिंग के लिए बहुत सारे बच्चे हैं डेवलप हो जाता है। तो जैसे और nutrition और उसकी requirement कैसी है क्योंकि वो लाइफ तो सेव का ब्लड सेव करना very important Nandita donation activities along the cancer awareness and everything. So, thank you. Very you have knowledge of CDC, what this blood very efficient. Yes. Of investigations. People also but so most of the daily routine investigation capillary yes now we are doing about only capillary sampling सैंपलिंग को एक साथ कम्युलेट करते हैं। क्या आपने कि जब किसी ने इंस्ट्रक्शन दिया, बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया, जूनियर जाके सैंपलिंग करने लगा, ऐसा नहीं है। तो एक बार आप नोट करते जाओ और पूरे दिन का एक साथ अक्युमुलेट करना जरूरी है। उससे एक तो बच्चे को इन्फेक्शन भी कम होगा और ब्लड वेस्टेज भी कम होगा। बाकी रूटीन खाली कैपिलरी ब्लड वेस्ट उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट परफ्यूजन और हेमेटोक्रिट का पता चलता है। देख लेना खुल जाए मैं आपको का एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट सीबीसी पीरियड एंड ड्यूरिंग जनरेशन इज आल्सो वेरी पीडियाबैक जिससे ताकि एक बच्चे को एक ही डोनर का प्लेटलेट या ब्लड एक ही डोनर का मिले ताकि उसको एलिमिनेशन की रिस्क कम से कम हो। तो एटलीस्ट को का बहुत ही वियर्ड रूप कर दिया है क्योंकि पीडीएफ मोस्ट ऑफ टाइम हम नहीं करते हैं और उसी सीबीसी को भी एनालाइज खाली 3 ही पैरामीटर देखते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और टीएचसी। तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। इस बार और टोटल इसको गिविंग टाइम लीडर सर्विस में नाम तो डेफिनेटली सर तो मोस्टली जो ट्रांसप्लांट डिपेंडेंट मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया है जो करते हैं या प्योर ब्लड से तो उसका टारगेट से हम ब्लड कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन उसका प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन मान लो 5 है और हमें एक 10 किलो का बच्चा का हीमोग्लोबिन 10 लेवल पहुंचाना है तो कम से कम एवरी 5 ml जो नॉर्मल पीआरबीसी हम यूज करते हैं एक एवरी 5 ml से 1 ग्राम पर डेसिल हीमोग्लोबिन है तो 10 किलो के बच्चे का एक तो उसका 6 से 10 करना है तो 10 किलो के बच्चे को थैलेसीमिया वाले को आप 200 नॉर्मली ज्यादातर 10 ml पर केजी पर एक साथ 200 ml दे सकते हैं या छोटा बच्चा है तो वो रिक्वेस्ट में स्पेशल को टोटल ब्लड इतना चाहिए और जिसमें से आधा आज हम इतना देंगे कल इतना देंगे। तो यदि पीडियाबैक फैसिलिटी अवेलेबल है तो सर ब्लड बैंक आपको सपोर्ट कर देगा कि एक ही पेशेंट डोनर का उसको ब्लड मिल जाए।
with the pediatrician and the blood center, so we can avoid patient transmission from patient to next. अपन बाल करते हैं तो इसी टाइप को सिचुएशन की तरह and thank you, sir, for very enlightening session. I request our chairperson, Dr. Sanjay Prakash sir, to honor our speaker, Dr. Siaram sir. now, like Dr. JDH, Additional Medical Director, Jaipur, to deliver his talk. Yes, good afternoon to all of you. We are talking about the blood since morning. And most of us, we are a blood supplier. Most of you in the audience are the blood bankers are there. So we know what is the blood, how it is collected, and blood is a vital and a life-saving drug. सारी समस्या blood को drug कहने पे है. When it is a drug, so it is always used for an action. So when there is an action, so there might be definitely some reaction may be there. हर सिक्के के दो पहलू हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा. मैं आपको एक मूवी, छोटी सी मूवी दिखाना चाहता हूं. आजकल मूवी की ही बात हो रही है. कुछ पार्टियां उस मूवी के अगेंस्ट में हैं और कुछ उसके समर्थन में हैं. तो आज सुबह से अपन पढ़ाई करते करते एक मूवी की छोटी सी बात, अब सारा सवाल तो पे आ गया. जब ड्रग है, एक्शन भी है, तो कभी रिएक्शंस भी है. सो वी ऑल मस्ट नो द एक्शंस हमने पढ़ लिए, रिएक्शन भी हम जानते हैं. और रिएक्शन जब हो गया या होने वाला है या इसको कैसे प्रिवेंट करें, सो दिस इज ए जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर एंड द यूजर इज देयर. सो माय टुडेज lectures, the highlights for the blood transfusion reaction, the adverse of the blood is there. The objective of my today's talk is just to brief, to know what are the BTR, to understand their types and causes, to diagnose when they might occur, or to know how to prevent and manage and to record them is there. I will go fast because I think we are already late. As far as the blood reactions, they can be categorized on the basis of the time to occur. There might be the immediate reactions or they might be a delay. If they are occur within the 24 hours, then they will be termed as the immediate, or beyond to that, they are termed as
the delayed transfusion reaction is there. And some of the reactions can causes the hemolysis. Hemolysis of the red cell which are transfused, or the hemolysis of the recipients of the red cells. So these reactions can be termed as the hemolysis, hemolytic transfusion reactions, and other maybe the non-hemolytic transfusion reaction is there. On the basis of clinical spectrum, how they will harm to the recipient, they can be again categorized on the basis of the clinical, the mild, moderate and the severe. कुछ भी नहीं होने से बहुत कुछ हो सकता है blood transfusion reaction से. Even the patient might be compromised, the death may be there. As far as the immediate transfusion reactions is there are so many categories of the immediate transfusion reaction is there. The most they are termed as the FNSTR, febrile non-hemolytic transfusion reactions, allergic reactions, anaphylactic reactions, acute hemolytic transfusion reactions, transfusion-related acute lung injury, TACO, septic infections. So these all types, these all reactions are usually occurred within few minutes to the 1 hour or the 24 hours is there. So that's why they are termed as the acute transfusion reaction is there. In the delayed category, so there again, there may be the delayed hemolysis of the transfused cell or the recipient cells, which may be ignored if it is not, if the continuous kept watch is not there. There might be the dangerous reaction, which is termed as the TA-GVH transfusion associated graft versus host reactions, post-transfusion purpura, TRIM, blood transfusions associated infections in the recipients. So there are so many other categories are there. The most commonly occurred transfusion reaction which we should encounter into our day-to-day practice, ब्लड बैंक्स में भी बहुत सी बार बैक रिटर्न में आते हैं कि सब रिएक्शन हो गया. So these are a few, as the name suggests, the FNSTR, the febrile non-hemolytic transfusion reaction is there. Means the fever is there. The main alarming agent sign is the fever is there. Most commonly reported transfusion reactions. So there is usually rise in 1 degree temperature just after the transfusions of the air. Normally, the patient, the zero hour, the patient was normal in relation to the temperature is there. If there is chances, if there is increase in the 1 degree of the temperature or the body temperature, it is fever. The fever which is caused by transfusions, it may be accompanied by the chills and the rigors. There is a tachycardia, dyspnea, cough, and the hypertension is there. Usually, nothing to be worried. Usually, they are self-limiting in the most of the cases. And the most commonly patients are seen, it is a multi-transfused patients, multi-transfused patient. जिन मरीजों में बार बार ब्लड चाहिए या मल्टी ग्रेविडा पेशेंट्स, these patients are such type of the susceptible patients which can occur, encounter by the FNSTR is there. So the history of the blood transfusion must be also provided to the blood bank is there by the user is there. कि इसके पहले 3 यूनिट चढ़ा था, हर बार ब्लड चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाता है, फीवर आता है, ये आता है. So if the appropriate information is given to the blood bank, so there might be some appropriate action can be taken is there. What is the reason? What are the etiologies behind? It is due to cytotoxic antibodies. In the leukocyte antibodies there, if these antibodies are present in the recipient plasma के अंदर leukocyte के against में antibodies हैं. So these, if there is antigen antibodies meeting, they will occur, the reaction will occur. Then what will be happen? So there is a release of the cytokine is there.
then release of endogenous pyrogens which leads to the fever is there. ल्यूकोसाइट हमने दिए, साथ में ऑलरेडी एंटीबॉडीज रेसिपिएंट में है, रिएक्शन हुआ, पायरोजन रिलीज हुए, फीवर आया. As when we know which one is the offending agent, these are leukocytes. So these type of the reactions can be easily prevent up to some extent is there by preventing the leukocyte reduced blood is there. So that's why the history is more important to be provided along with the blood acquisition form to the blood center is there. The second most common allergic transfusion reaction, as the name suggests, allergy. पहले ठीक था, चढ़ाते ही एलर्जी हो गई. How they will represent is there. This is the common transfusion reactions can be mild, moderate और life threatening. अब ये डिपेंड करता है उस एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शंस पे, एलर्जेंस के रिएक्शंस पे, एलर्जेंस के अमाउंट के रिएक्शंस पे, या रेसिपिएंट के सेंसिटाइजेशंस के ऊपर. What will be the clinical spectrum is there. Usually there is a mild, but it can lead to the moderate or in the life-threatening agencies there. So the only may experience as their urticaria, pruritus, rush and the flushing, dyspnea and anxiety, wheezing, hypotension, nausea. So these are usually similar as like the other drug allergy and the food allergy is there. जैसी वो होती हैं, ये भी वैसा ही रिप्रेजेंट कर सकता है. These clinical presentation they suggest कि पहले ठीक था, देने के बाद हुआ, then there is exposed to foreign substance in the blood product to which the recipient is sensitized is there. The antibody usually it is because of the culprit antibody is there, IgE. Antibody in the donor plasma is which react in the antigen in the recipient is there. So there is the mast cells are broken, release of the histamine which causes the perivascular dilations. So the patient will represent the pruritus and urticaria. How we can manage it? It can be managed very easily. Stop transfusions, keep venous access open. क्यों? Because always maintain the venous access of the recipient is there, because the spectrum is wide enough from mild to moderate to the severe is there. In the later stages, the venous access might be very difficult to assess is there. If the patient goes to the shocking, then treat symptomatic, usually antihistaminic. The acute hemolytic blood transfusion reaction is there. As the name suggests, hemolysis, the most dangerous. Acute hemolysis blood transfusion reaction is there. Just like a front side correlation is there. एक गाड़ी इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, बीच साइड में रोड एक्सीडेंट हुआ है, दोनों 100 की स्पीड पे चल रही थी. What will be happened? There is a accelerated declearance or lysis of red cell in the transfused recipient, usually due to immunological incompatibility between donor and the recipient is there. It is a completely blunder. Antigen and antibody direct correlation is there. There is a complete mismatch in the donor and the transfused blood is there. They are acute within 24 hours. They might be delayed if the sensitization is slow enough. And the site of intravascular hemolysis, कि blood cell जो हमने दिए हैं, they will be broken. So the site of hemolysis again might be depend on what type of the antigen antibody mismatch is there. If direct and opposite and the complement inside the participate activated, then there is a intravascular hemolysis is there. Vessels के अंदर ही hemolysis होगा. Most common example is अगर A का blood B को दे दिया
उधर एंटीजन दूसरा है, इधर एंटीबॉडी दूसरी है, कंप्लीमेंट सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, देन द ट्रांसफ्यूज जो आरबीसीज हैं दे ऑल विल बी ब्रोकन, they will be attacked by the recipient's plasma antibody is there. So that if the complement take parts, then the hemolysis is intravascular. If there is only sensitization is there, if the complement didn't take participate, then the hemolysis with the extravascular in the spleen and the other organs is there. Intravascular hemolysis is more dangerous as compared to the extravascular, because the intravascular is acute in nature. So the patient, how the patient will represent, there is restless anxiety, respiratory distress syndrome, vomiting, diarrhea, fever, chills, pain in chest and lumbar pain, hypotension, circulatory collapse, shock, hemoglobinemia, hemoglobinuria, oligouria and uria. These all are the sequences is there. ये क्लिनिकल स्पेक्ट्रम पे पता चलेगा, क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता, लाल ब्लड चाहिए, लाल ब्लड हमने चढ़ाया है, पेशेंट चल रहा है, then these signs and symptoms will appear chronologically is there. And during the surgery, what is the indication, what is the sign? Because these signs and symptoms might be mistaken if the patient is already anesthetized is there. वो तो बेहोश है, उसका पता नहीं चलेगा कब वॉमिटिंग, उसको पता नहीं चलेगा और क्या है. Then the most common sign is the oozing or undue bleeding from the surgical site is there. गुब्बारे से उठेंगे, सर्जन कहेगा देखो डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, ये ब्लड is in case. So this might be the sign that the suspicious point is there if the blunder is happening. Then the most common reasons for receiving an ABO incompatibility unit of the RBC is, these are the clerical error is there. आज की तारीख में इतने अच्छे हमारे पास एंटी सीराज हैं, एंटी जैसे हैं, इतना टेक्निक्स भी बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. मोस्टली बड़ी आसानी से ब्लड ग्रुप का पता चलता है पेशेंट्स का. अच्छे एंटी सीरा, मोनोक्लोनल एंटी सीरा है, विद इन फ्यू सेकंड्स हमारे रिएक्शंस देते हैं. द मेन रीजंस टू हैपन सच टाइप ऑफ द ब्लंडर मिस्टेक, it is because of the clerical error is there. The clerical error might be happen in the blood bank, in the clinical side, in the ward side, in the labeling is there. Otherwise ऐसा कोई मिस होने का कोई चांसेस नहीं है कि हमने ग्रुपिंग किया कि उसके ग्रुपिंग में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आई या पेशेंट्स के कभी ग्रुपिंग में दिक्कत आई. देयर इज ऑलवेज ए क्लरिकल एरर. देयर माइट बी द कॉमन नेम के पेशेंट्स हैं, कॉमन नंबर हमने गलत डाल दिया, सैंपल ए की जगह बी को ले लिया या उसका ले लिया, वट एवर इट इज. बट द मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बिकॉज ऑफ दे कैन बी इजीली प्रिवेंट बाय टेकिंग जस्ट द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग the requisition filling and during the sample collection and during the cost matching. What can do, how they can be managed? Stop transfusion reactions, replace the transfusion set, keep main line open, maintain the airway, the oxygens, circulatory support by the IV fluid, prevent renal failure, मैनेज डिक. क्लिनिकल स्पेक्ट्रम उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज्यादा एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शंस है और कितना अमाउंट ब्लड का चला गया और कैसा पेशेंट्स ऑलरेडी उसके अंदर इम्यून सिस्टम इज देयर. बहुत जल्दी पता चल गया तो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा, और बहुत लेट पता चला then patient might go toward the oligouria and uria, renal failure, dick, or ultimately the death might be occurring. Again, it's a anaphylactic shock. As the name suggests, हमने सबने anaphylaxis पढ़ा हुआ है. As the name suggests, the anaphylactic shock is there just after initiation of the transfusions of any product. Either it could be the platelet, plasma, blood, whatever it is. लगाते ही anaphylaxis में patient चला गया. So this is termed as the anaphylactic shock is there. Anaphylactic shock. It is again grave emergency is there, but it is one of the most severe, but it is rare.
It can occur as little as a few drop ml of the transfused blood. हमने लगाया, शुरू किया और पेशेंट सिम्टोमेटाइज हो गया. हम बहुत सी बार देखते हैं कि पेनिसिलिन की टेस्टिंग में भी बहुत से पेशेंट मर जाते हैं. बहुत सी ऐसी हमारी ड्रग्स हैं जो हमारे एनेस्थेटिस्ट में टेस्ट करते हैं. ड्यूरिंग टेस्टिंग, सो द पेशेंट कैन, द कंडीशंस कैन बी वर्सन. द पेशेंट, so such type of the happening, such type of the symptomatize might be happen here with the blood and blood products is there. Amount of the blood is no matter. These reactions are very severe and can be life-threatening if no prompt action is taken. What is the reason behind to this? So if there is a congenital IgA deficient in some of the patient, in some of the person is there. Congenital IgA deficiencies already in the recipient, and the patient is there. If they develop the antibodies toward the A antibody, IgA antibody is there. And the occurrence of these reactions, 700-800 में से एक आदमी IgA deficient हो सकता है, एक जनरल populations में से. और if he or she is IgA deficient and antibodies are developed, if any blood component is prescribed, transfused, so there are the chances of the anaphylactic shock, the anaphylactic reaction might be developing. The symptoms again same, the hypotension, tachycardia, loss of consciousness, cardiac arrhythmia, shock, and the cardiac arrest is there. Here the time is very precious because they are a severe in reaction is there. The management, immediate stop transfusion reactions. All supportive measures should be taken to save the life of the patient is there. If it is known, the history again is here important is there. कि पहले पता है कि आप किसी को आप जरूर पूछते हैं जैसे हिस्ट्री में भी कि आपकी कोई ड्रग एलर्जी है क्या. जब भी हमारे our anesthetic colleague usually ask if there is any drug allergy, so history always suggests, the previous history always suggests to make the safe transfusion is there. The trolley, नाम बता दिया trolley. I think my previous speaker has already enlightened the trolley is there. As the name suggests, the full form of the trolley is that it's acute respiratory distress, acute respiratory transfusions related acute lung injury is there. It is symptomatized as the ARDS-like syndrome is there. But in ARDS, there is no history of the transfusion is there. If ARDS-like symptoms appear just after the transfusions or within the 6 hours is there. अभी 12 बजे ब्लड लगा है, शाम को 6 बजे तक उसको खतरा है. And these reactions are, they will be represent clinically tachycardia, fever, hypotension, bilateral pulmonary edema, non-cardiogenic pulmonary edema is there. Here, heart का कोई कसूर नहीं है pulmonary edema के लिए. It is all because of, it is a non-cardiogenic edema, pulmonary edema is there. It is the diagnosis of exclusion. Diagnosis of exclusion की patient safe था, पहले भी कुछ नहीं था, during transfusions कुछ नहीं था. If the patients develop such type of the reactions is there, then a high degree suspicious of trolley can save the life of the patient because the clinical spectrum again is wide enough. The patient might be compromised if it is not properly managed and within the time is there. The diagnosis is usually criteria of the exclusion is there. Then there might be the 5 to 10% fatality rate may be happen. Diagnosis कैसे करेंगे? History हमारे पास पहले से ही है कि पहले patients के अगर already ARDS like था तो उसको transfusions पे again it can be worsen the conditions is there. So there is the lungs are previously clear, that is the consolidation is there. What are the reasons for that? हम कितना भी टेस्ट कर लें, ए को ए मिला दिया, बी मिला दिया, बिल्कुल ड्यूरिंग क्रॉस मैचिंग कोई भी कई बार कोई साइन एंड सिम्टम्स कोई भी क्लू नहीं मिलता कि पेशेंट्स में आगे जाके ये ब्लड रिएक्शंस कर जाएगा.
द ट्रॉली के लिए या और भी कुछ रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए. सो देयर इज ए what are the offending agent is there in the trolley to causes the trolley is there. There is a passive transfer of the donor allo antibody in plasma of transfused product. They could be the HLA, anti-HLA, class 1, class 2, human neutrophilic antigen is there. So what will be happened? These antibodies, they will bind to the circulatory WBC is there. एंटीजन एंड एंटीबॉडी की रिएक्शंस हुई, एंटी ल्यूकोसाइट एंड एंटीबॉडीज आर देयर. दे विल अटैक ऑन द ल्यूकोसाइट, दे विल बाइंड, एंड दीज एंटीबॉडी इज देयर. व्हाट दे विल कॉज? दे विल अटैक ऑन द एल्वेलाई. लंग्स के अंदर जो एल्वेलाइज है वहां पे जो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, दे विल अटैक इज देयर. So this is a histological histological slide of alveoli. Usually the alveoli are empty, for the air spaces is there. So a free air movement is there along with the capillary, while passing the capillary is there. When these antigen and antibody attack on this capillary wall is there, so there is a leakage of fluid inside the alveoli is there. So the lungs become the consolidated. The free spaces which was available for the transfer of the gases, now it is filled with the fluid. The fluid it is came because of these antigen antibody reactions, attack on the capillary wall, and the lungs are the capillary spaces, alveolar spaces are filled with these. So there is a difficulty in the breathing, difficulty in the gases exchange is there. So these symptoms are resemblance with the ARDS like syndrome is there. The trolley, no test to by which we can previously diagnose the trolley. हम पहले नहीं पता कर सकते कि इसके अंदर होगा या नहीं होगा. It should be suspected. टैको पिक्चर ही बता रही है कि बहुत ज्यादा कुछ हमने चढ़ा दिया. जितना उसके ऊपर था, हमेशा excess of the everything is bad. As the name suggests, the TACO, transfusion associated circulatory overload is there. What is the etiology? It can result from rapid transfusion of a large volume of the blood without equivalent blood loss is there. एक्सीडेंट का पेशेंट है, लाल ही लाल सब जगह दिखा, हमने सोचा 3-4 लीटर ब्लड लग गया, 3-4 लीटर ब्लड लॉस हो गया. सो आवर एस्टिमेट मे बी रॉन्ग, एंड इफ वी ट्रांसफ्यूज्ड too much amount of the blood is there, then it can leads toward the TACO transfusion, or it can also occur amount again थोड़ा भी हो सकता है. It can also occur after transfusion of small amount of blood to patient with abnormal cardiac function and the reserve is there. Patient already cardiac compromise है, वो अपना बैठे बैठे काम चला रहा है, रूटीन कंडीशंस में उसका काम चल रहा था, लेकिन ब्लड लॉस या एनीमिया की वजह से या किसी और वजह से हमने जब ट्रांसफ्यूजन दिया, थोड़ा रैपिड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या थोड़ा भी अमाउंट हुआ, ऑलरेडी पेशेंट इज कंप्रोमाइज, सो द sign and symptoms of the TACO are developed is there. How it will be: severe headache, dyspnea, cyanosis, congestive heart failure, pulmonary edema. Bacterial contamination, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. Bacterial contaminations, it is rare, but it could be the life threatening. अब यूजुअली ब्लड में कोई बैक्टीरिया नहीं है, किसी के अंदर भी यूजुअली नहीं है. सो इट इज फ्रॉम वेन टू वेन इज देयर. द ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी डोनर and it is transfused by taking all the precaution from vein to vein is there. When there is this vein to vein from donor to the recipient, if the chain of safety is broken, kahin pe bhi,
then the chances of the offending agents, bacteria can enter in the recipient or in the blood bag or in the whatever. But such type of the reactions are also severe is there. So we must take the most common site. What are the pitfall? What are the regions from where the blood can get infected? Most common site, सबसे ज़्यादा the donor skins. Donor की history है, usually fit है, लेकिन we can compromise the aseptic precautions during the blood collection is there. The donor site, puncture site is there. Donor bacteremia कई बार बड़ी slow growing bacteria है. हाई बैक्टीरिया में अगर डोनर में होगा तो वो कभी नहीं आएगा ब्लड डोनेट करने की. एक्यूट न्यूमोनिया है या कोई और है तो वो आएगा ही नहीं देने. स्लो ग्रोइंग अगर बैक्टीरिया कुछ है आज की तरह, देन देयर माइट बी सम चांसेस फ्रॉम रेसिपिएंट टू द from donor to the recipient, the transfusion of the infected blood might be there. During collection, during storage, during processing, and during transfusion is there. So if the chain is broken, then the offending agent might be enter, can harm to the recipient is there. दो मिनट और ले लो. डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अपन ने ब्लड चढ़ा दिया, ठीक है, मरीज घर पे चला गया, लेकिन 5-7 दिन बाद फिर वो बेचारा आया या जो भी पेशेंट था कि साहब बात तो बनी नहीं कि 5 ग्राम पहले 7 ग्राम हीमोग्लोबिन था, उस समय थोड़ा सा लगा, अब वापस 5 ग्राम आ गया. So it could be because of the delayed hemolytic transfusion reaction is there. So here the hemolysis is slow enough in the extravascular in nature, but is a continuous slow in nature. After 7 to 8 days, 1 month, the patient come again, then complete with the low hemoglobin is there. So if the sensitization is not so much acute in nature, the continuous blood loss and the clearance of the transfused blood is from the recipient's body is there, can lead to a delayed transfusion reaction. सबसे डेंजरस डिलेड में ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, मोस्टली बहुत रेयर है, लेकिन हम को देखने में अभी मुझे भी हमारे भी प्रैक्टिस में कभी आई नहीं अभी तक, लेकिन इट कुड बी हैपेंड इज देयर. ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इज देयर. सो वी हैड ट्रांसफ्यूज such offending agent which can harm to the recipient is there. Even the graft versus host disease is there. It is a potentially lethal. Complications following the blood transfusions after 8 to 10 days. There is a component containing the viable donor T lymphocyte is there. किस तरह के मरीजों में होगा? To severely immunocompromised patients, recipient who share the common HLA typing, haplotyping, and लास्ट में फिर आगे तो पे कि अब if any transfusion reaction is occurs, कोई भी ना तो कोई क्लिनिशियन चाहता है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर हो, ना कोई सप्लायर चाहते हैं द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कभी हो. सो देयर आर आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस देयर माइट बी सम चांसेस टू बी रिएक्शन इज अकर. इफ द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज अकर, आवर फर्स्ट ऑफ आवर ड्यूटी इज टू प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल टू मैनेज द पेशेंट इज देयर according to the available conditions, according to the available resources at our site, at our institution. Our first prime duty to manage the patient and to record these transfusion reactions and to inform to the blood bank is there. क्योंकि और इन सबसे भी ऊपर always maintain a good healthy relation in between the
the users and the supplier is there. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं ब्लेम कर दें कि मैंने सब ब्लड बैंक ने ब्लड गलत दे दिया, ब्लड बैंक वाले कहीं उन्होंने सैंपल गलत दिया या कुछ भी किया. तो वी हैव आवर फर्स्ट एम इज टू मैनेज इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैनेज द पेशेंट इज देयर. अगर पेशेंट मैनेज हो गया तो कुछ भी नहीं होगा. अगर पेशेंट मैनेज नहीं हुआ तो राई का पहाड़ बनते भी देर नहीं लगेगी आजकल किसी भी चीज में. चाहे हमने कुछ भी नंबर गलत लिखा था या कुछ भी अगर हमने लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेंटेन, वी मस्ट हैव ए हेल्दी रिलेशन, वी मस्ट कीप अंडरस्टैंड टू ईच अदर. रेसिपिएंट responsibility, supplier responsibility, prescription responsibility is there. First of all, to manage, to record them, and to always take the history so we can prevent in the further is there. हर गलती एक सीख देती है ताकि आगे से कभी वो रिएक्शंस उसके अंदर नहीं हो, उस पेशेंट्स में भी या किसी और पेशेंट्स में भी. थैंक यू. And you have Thank you, sir, for this informative and highly beneficial session. I request both the chairpersons, Dr. Amit Sharma, sir, and Dr. Sanjay Prakash, sir, to honor the speaker, Dr. Devraj Arya, sir. Thank you, sir. Now I call upon Dr. Saptarishi Mandal, sir, to honor our chairpersons. I would like to also call upon Dr. Anubhav Gupta, sir, to honor our chairpersons. Thank you, sir. With this, we come to the end of the session for today. We hope that through all the lectures today, the knowledge gained was immense. We request everyone to disperse for the day and for tea. We humbly ask everyone to assemble here tomorrow by 9 a.m. for more such interesting sessions. Thank you so much.